how to learn the weights. So what is weight? That's a W. How to learn the weights, that is that thing between W, you can say that theta. Okay, maybe in this slide we used theta actually. So that's actually a theta, how to learn that. So perceptron algorithm में हमको पता है how to learn that. Okay, perceptron में हम लोग को पता है, but now let me just use this error surface to learn a value of w's. Okay, because हर एक टाइम हमारे पास वो फंक्शन सेम नहीं होगा. परसेप्ट्रॉन में हमारे पास एक फॉर्मूला था, using this formula we can just calculate the next weight, but can I just change that formula? Is that formula is quite accurate, or is that formula is the best one in the sense memory consumption and speed? Generally हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ डील करते हैं. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन द सेंस व्हाट? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन द सेंस अमाउंट ऑफ टाइम required to run the algorithm. Amount of time required to run the algorithm, that is time complexity. Space complexity in the sense what? Space complexity in the sense amount of time, amount of space required to run the algorithm. Amount of space required to run the algorithm. So now I want to just train my model. So मैं कोई भी एक function, एक formula use कर रहा हूँ. So I want to just check, oh, is this a best formula? ये कम सबसे minimum time, minimum space use करता है कि नहीं? So उसके लिए हम लोग उस function को perceptron में हमने जो algorithm learn किया था, sorry perceptron algorithm में जो function हमने discuss किया था, उसको थोड़ा साइड में रख के दूसरा कोई फंक्शन सोचने की ट्राई करते हैं. सो नाउ कंसीडर दिस इज द पॉइंट. ये थोड़ी देर पहले, थोड़े मिनट्स पहले या लास्ट पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था. दिस इज द एरर सरफेस. नाउ कंसीडर दिस इज द पॉइंट with some specific value of w. So consider this is the value of w1, this is the value of w2 for this error point. Just consider this is w1 and this is w2, and this is the cost function. Okay, this is the cost function with w1 and w2. So w1 w2 मैंने ट्यून किया, so मुझे कुछ cost value मिली. That's my error surface value. Now what is my requirement? At anyhow मुझे ये error value decrease करनी है. So what is my requirement? My requirement is मुझे इस तरीके से कुछ down 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 चलते रहना है. Okay, so this is my requirement. मुझे इस point पे पहुंचना था, मुझे इस point पे पहुंचना था by just changing the value of w's. So we can just do one thing. W की वैल्यू चेंज करने की जगह मैं ऐसा करें, दिस इज द एरर रेट. तो अगर मैं W की वैल्यू पहले से फिक्स कर दूं और एरर रेट मुझे कम करना है, आई कैन जस्ट चूज द नियर अबाउट लाइक वैल्यू, और मैं लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके स्क्रॉल डाउन कर सकता हूं. अकॉर्डिंग टू दैट मैं W की वैल्यू चूज कर सकता हूं. मतलब मैं बोल क्या रहा हूं, मेरा कहने का सिंपल सा मीनिंग था, मैं कुछ इस पॉइंट पे हूं. ओके, मैं कुछ इस पॉइंट पे हूं और मुझे सबसे डाउन पॉइंट पे आना है. मिनिमम कॉस्ट मतलब मिनिमम एरर चाहिए मुझे, मेरा कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए. तो व्हाट आई एम सेइंग, ओके मैं इस पॉइंट की जगह मैं ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूं, ये पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूं. बट कैसे सिलेक्ट किया? सर बाय जस्ट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ w's, बाय जस्ट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा. बट दैट्स द क्वेश्चन, हाउ टू चेंज द वैल्यू ऑफ थीटा. सो गाइस आप इंटीग्रेट आप इटरेशंस यूज कर सकते हो, कंटीन्यूअस वैल्यू यूज कर सकते हो w की with the actually negative slope, with actually negative slope. So negative slope यूज करके w का नेक्स्ट वैल्यू कंसीडर करें, w का नेक्स्ट वैल्यू कंसीडर करें, कोई फॉर्मूला यूज मत करें, नियर अबाउट वैल्यू w की चूज करें एंड आगे बढ़ते जाए. दैट इज द सिंपल थिंग. नियर अबाउट वैल्यू w की चूज करें एंड आगे बढ़ते जाए एंड जस्ट चेक आपका लाइक वैल्यू यहाँ पे जो एरर रेट है वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो हम लोग को लाइक नेगेटिव स्लोप में जाना है, देन ऑलवेज द वैल्यू विल बी डिक्रीज. नेगेटिव स्लोप में जाना है तो ऑलवेज आपका वैल्यू डिक्रीज ही होगा. So now that is the thing. So अगर मान लीजिए, now what about the error surface? वो भी always matter करता है कि आप कौन से error surface पे काम कर रहे हैं. Just check this thing. अगर आपके पास इस टाइप का error surface है और आप minor changes करते हो, then always आप ऐसे point पे पहुंचेंगे after some changes कि जहाँ पे minimum cost होगा. Okay, जहाँ पे minimum cost होगा. So that's actually univariant graph, जहाँ पे एक ही मेरे पास variable था, ये bivariant है, इसमें w1 w2 है, but here only w is there, only single w is there. Okay, so वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती जनरली उसमें हम लोग को. This is the standard approach, you can simply say. But now like, so that's the thing, like how to just change the w. So w कैसे change करना है, we will just check, like we will just learn after some slides, after few minutes. But the thing is error surface में हम लोग w की वैल्यू चेंज करना चाहे, so error surface से हम लोग को इतना सा आइडिया आया कि नियर अबाउट w की वैल्यू ले, बट विद द नेगेटिव स्लोप. नेगेटिव स्लोप क्यों? बिकॉज मुझे डाउनग्रेड जाना है, मुझे डाउनग्रेड जाना है, मुझे अपवर्ड नहीं जाना है. सो दैट वी विल जस्ट चूज द नेगेटिव स्लोप. Okay, perceptron algorithm is an instance of this. Instance in the sense I mean to say कि मान लीजिए
मुझे एम्प्लॉय क्लास के 3 वेरिएबल बनाने हैं. So first employee, second employee, third employee, सब में same properties in the sense integration function, or I can say activation function, or hidden layers, or neurons. Okay, so everything is same. हर एक employee के पास same चीज है. तो एक class में बना दूंगा with the common properties, but उसमें मैं loss function change करूंगा, integration function change करूंगा. So consider I have a L1 and loss function is L1, integration function is I1 for the first employee. For the second employee, it's L2 and I2. For the third employee, that's L3 and I3. So मैं 3 अलग-अलग algorithm पे काम कर सकता हूँ. What I tuned, I just changed the function, but concept is same. Okay, concept in the sense हम लोग neural network पे तो same काम करने वाले हैं. Okay, neural network पे तो same काम करेंगे. मतलब जितने भी variety of models या variety of algorithms हम discuss करेंगे, सबके अंदर integration function होगा, सबके अंदर activation function होगा, and something like that. वो सब कुछ common होगा. But now the question is, what we want to change? हम लोग उसके अंदर की functionality, उसका like algorithm change करेंगे. Number of functions are same, but functions are different. Number of functions are same. 5 function तो सब में 5 function, but उसका like function in the sense formula different होगा. Okay, so I can say, okay, first algorithm, in short, first employee is nothing but an object of my class. It's nothing but an instance of my class. Second algorithm, in the sense, second object is nothing but an instance of my class. Third one is also an instance of my class. So right now, up to this, we learn only a single thing, that is nothing but a perceptron algorithm. So perceptron algorithm is nothing but an instance of this formula. Actually, you can say that. Okay, it's nothing but a single instance. Actually, so we want this generalized formula. Actually. So now that's that. That is something about the actually like error surface and how to tune, how to choose the next weight. So if you want to just change, if you want to choose the next weight. So एक चीज हमने ऐसा देखा कि भाई हम लोग नेगेटिव स्लोप के साथ नेक्स्ट वैल्यू, नियरेस्ट वैल्यू और W1 और W2 की चूज करें and just try to minimize the cost value. So now this is the visualization on a contour plot. So now this is nothing but an error surface. This is nothing but an error surface. This is quite good error surface actually. क्यों मैंने ऐसा बोला काफी अच्छा error surface है? Because जैसे जैसे आप इसमें nearest value में जाने की ट्राई करोगे, you will reach over here. Okay, आप इस पोजीशन पे पहुंचोगे, it has actually minimum it has actually a minimum error like value. Okay, minimum cost value it has actually. So now consider either of the circle you can consider. जैसे कि मैं ये वाला consider कर रहा हूँ. Okay, this thing I want to consider. So second layer actually. So what's that? That is actually like that's actually like W1, W2 values या WN values हम लोग यहाँ पे select करके चल रहे हैं. W की N values हम यहाँ select करके चल रहे हैं, तो मेरे पास एक cubic value मिली. Okay, एक circle value मिली. Now what is my requirement? Like consider ये जो value था उसको मैं इस round के साथ compare कर रहा हूँ. The outer round. Okay, diagram like value like draw सही से नहीं हुआ है. Okay, just consider this outer value. जो मैंने cubic value वहां से sorry एक circular value मैंने second जो select की, just उसको आप यहाँ पे select करके चले. मतलब उसको ये consider करके चले कि this is the outer. So that's nothing but in value of W1, W2. Okay, now what is my requirement? I am at some point over here. मैं यहाँ पे कहीं पे हूँ. Now I want to just change the value of W and W1, W2. So it will be near about the next one. It will be moved to the next one. It will be moved to the next one. Like step by step, it will be over actually a value. Okay, like smallest value. सबसे near smallest value पे वो पहुंच जाएगा. So that's nothing but an. What is this? This is nothing but an actually like visualize the error surface on a actually contour plot. So that's quite good like error surface, so that हम लोग इतना अच्छे से उसको visualize कर सकते हैं. That's that. Now